Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are good. In your previous lesson, we have done the exercise of chapter number 3 on the ocean. Hope you have understood the lesson very well and noted down all the material which has been provided to you and learned the question answers and the main idea of the poem. With this, we have completed our 3 chapters, 2 letters and 2 applications. Today it is the turn of stories. Story writing. Why do we write story? It is said habit is the foundation of writing. Habit is the foundation of writing because when you have developed a habit of writing, you know how to write, your mistakes are highlighted, and if this habit leads you to write creatively anything, you can write any letter on the topic provided to you, any story, any application, and even you are able to compose an essay in your own words. So once you have developed the habit of writing, and there you go to write down anything in your own words. Firstly, I would tell you what happens when you write stories. It develops your abilities. Character development, definitely before writing, you need to read some material or you need to hear something from your surrounding. Then you are able to write down. Yes. So, story writing develops your character, your grammar. When you are writing a story, there is a plot. So you develop a plot, and what happens when you write down a story? It requires a lot of writing skills. So it is not improved in once time. You need to write time and again on different topics, and in this way, the developing of your writing ability is there. Secondly, when you write a story, it keeps you motivated. It keeps you motivated. Why? Because there is instant gratification. Short stories, especially published short stories, help you with the desire to be heard and valued as a student. So when you write down a new story with an old topic, you can submit it to your teacher in the form of an assignment, and when it is shown to other students or it is published in the classroom or in the school magazine, it keeps you motivated. And if you have written something very new, definitely your teachers, your fellows will be discussing it, and it will help you to be writing more stories on more topics. Third point is it develops habit. Which habit? Definitely the habit of writing. Unbreakable writing habit, because once you have developed how to write a story, you will start writing more, and when you will start writing more, your habit will be developed more, and when your habit is developed more, you will try to write in a more better way. By writing regular short stories, you can build an unbreakable writing routine that will have you bring out the words in no time. That will have you bring out the words in no time. Last but not least, these stories help us to gain different moral lessons and apply those in our own life as beginners. आप छोटे बच्चे हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का. So once you learn and write those stories, you learn moral lessons, then apply those lessons in your own life as beginners. मतलब कोई भी आपको moral lesson के साथ जो story पढ़ाई जाती है, उसका मकसद क्या होता है? To learn a moral lesson. That's why they are called
moral stories or the stories with a moral lesson. Today our first story is Do good, have good. इसको उर्दू में जैसा करोगे वैसा भरोगे भी कहते हैं या अच्छाई का बदला अच्छाई भी कहते हैं. This is a story about a bee and a hunter. This story is about a bee and a hunter, and the main character is bee, hunter and a dove. So there are total 3 characters in this story. The main are bee and the dove, and the secondary is hunter. So I will start reading this story for you. One day, a bee was drinking at a stream. One day, a bee was drinking at a stream. Suddenly she slipped and fell into the water. Despite the hard struggle, she could not manage to come out of the water. She was only at the mercy of the waves. She became helpless and quitted the struggle. So it happens in man's life कि जब इंसान जो है वो उम्मीद खो देता है. एक दिन एक मक्खी, मैं ये जो अंडरलाइंड है ग्रीन कलर के साथ इनकी उर्दू ट्रांसलेशन भी पढ़ देती हूँ. एक दिन एक मक्खी, ये बी कौन है? शहद की मक्खी. वाज ड्रिंकिंग, पानी पी रही थी. एट अ स्ट्रीम, एक नदी के किनारे. अचानक, सडनली, अचानक शी स्लिप, उसका पाँव फिसल गया. एंड फेल इनटू द वाटर, वो पानी में गिर गई. डिस्पाइट द हार्ड स्ट्रगल, बहुत शदीद कोशिश के बावजूद, शी कुडंट मैनेज टू कम आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से बाहर ना आ सकी. शी वाज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स, अब वो लहरों के रहमो करम पे थी. शी बिकेम हेल्पलेस एंड क्विटेड द स्ट्रगल, वो बेबस हो गई. हेल्पलेस, बेबस हो गई. एंड क्विटेड द स्ट्रगल, और उसने कोशिश छोड़ दी. नेक्स्ट पार्ट. A dove was sitting on a nearby tree watching the whole scene. She thought of helping the bee. She broke a leaf from the tree and dropped it near the bee. The bee caught on the leaf. Now her life was safe. She took rest on the leaf and dried her wings. Then she mustered up the power and took a flight to her hive. The bee was thankful for the kindness of the dove. From this yellow lines, a dove was sitting on a nearby tree. एक फाख्ता nearby करीबी दरख्त पर बैठी थी. Watching the whole scene, वो तमाम मंजर देख रही थी. She thought of helping the bee, उसने मक्खी की मदद करनी चाहिए या सोचा. She broke a leaf from the tree, उसने दरख्त से एक पत्ता तोड़ा. एंड ड्रॉप्ड इट नियर द बी, और इसे मक्खी के पास फेंक दिया. द बी गॉट ऑन द लीफ, मक्खी पत्ते पर बैठ गई. नाउ हर लाइफ वाज सेफ, अब उसकी ज़िंदगी बच चुकी थी. शी टुक रेस्ट ऑन द लीफ एंड ड्राइड हर विंग्स, उसने पत्ते पर आराम किया और अपने पर सुखाए या अपने पर खुश्क किए. देन शी मस्टर्ड अप द पावर, और फिर उसने अपनी ताकत बढ़ाई या ताकत को पूरा किया. एंड टुक अ फ्लाई टू हर हाइव, और अपने छत्ते की तरफ. हाइव क्या होता है? वो छत्ता जहाँ पर मक्खियों ने शहद के लिए एक झुरमट बनाया होता है, उसकी तरफ उड़ गई. द बी वॉज थैंकफुल फॉर द काइंडनेस ऑफ द डव, मक्खी फाख्ता की रहमदिली पर शुक्रगुजार थी. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पार्ट. After some days, a hunter came into the forest. कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया. And he saw the same dove sitting on a tree. और उसने उसी फाख्ता को दरख्त पर बैठे देखा. He aimed at her with her gun. उसने अपनी बंदूक के साथ उस पर निशाना बांधा. Aimed at, निशाना बांधना. Aimed at, निशाना बांधना. The dove was unaware of the hunter. फाख्ता को शिकारी का पता नहीं था या वो शिकारी से बेखबर थी. Unaware, बेखबर थी. Unaware, बेखबर थी. Just as he was ready to fire, जैसे ही वो
निशाना बांधने के लिए तैयार हुआ। एन इंसेक्ट स्टंग ऑन हिज हैंड, एक कीड़े ने उसके हाथ पे काट लिया। एंड हिज एम वाज मिस्ड, और उसका निशाना छूट गया। हेयरिंग द साउंड ऑफ फायर द डव फ्लू अवे, और गोली चलने की आवाज़ सुन के फाख्ता उड़ गई। द इंसेक्ट वॉज द सेम बी विच वॉज सेव्ड बाय द डव, ये कीड़ा वही मक्खी थी जिसे फाख्ता ने बचाया था। द बी हैड प्लेड हर पार्ट इन सेविंग द लाइफ ऑफ द डव, अब मक्खी ने फाख्ता की जान बचा के अपना किरदार अदा कर दिया था। एंड द मोरल इज़ do good, have good. So my dear students, hopefully you have understand the whole story. Do good, have good. This is your story number 1. This is your story number 1, and with this the story ends. Now we will move towards our second story, that is Thirsty Crow. This is a little shorter story and you will learn it very easily. Thirsty Crow, प्यासा कौवा। Once there was a crow. He was very thirsty. He flew here and there in search of water but could not found water anywhere. At last he reached in the forest. He saw a pitcher of water in the forest. The crow was very happy. He reached to the pitcher but water was very low. The crow was very happy. He reached to the pitcher but water was very low. He could not drink it. He looked here and there and saw a few pebbles nearby. He thought of a plan. He gathered some pebbles and put one by one into the pitcher of water. The water rose up. He drank water and flew away. I will read it for you with Urdu translation. This paragraph. Once there was a crow. एक कौवा था. He was very thirsty. वो बहुत प्यासा था. He flew here and there in search of water. वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा. But could not find water anywhere. बेटा यहाँ find आना है. When I will send you the picture, it will be corrected. He could not find water anywhere. वो पानी को कहीं तलाश ना कर पाया. At last he reached in a forest. आखिरकार वो एक जंगल में पहुंचा. He saw a pitcher of water in the forest. उसने एक पानी का घड़ा, पिक्चर, पानी का घड़ा जंगल में देखा. घड़ा जिसमें पानी भरते हैं, नॉट गड्ढा या सुराख, घड़ा जो मिट्टी का होता है. द क्रो वॉज वेरी हैप्पी. कौवा बहुत खुश था. ही रीच टू द पिक्चर बट वाटर वॉज वेरी लो. ही कुड नॉट ड्रिंक इट. वो इसको पी ना सका. ही लुक्ड हियर एंड देयर एंड सॉ फ्यू पेबल्स नियर बाय. वो उसको पी नहीं सका और उसने करीब ही कुछ कंकर पड़े हुए देखे. ही थॉट ऑफ अ प्लान. उसे एक तरकीब सूझी. ही गैदर्ड सम पेबल्स. उसने कुछ कंकरियाँ उठाई. एंड पुट वन बाय वन इनटू द पिक्चर ऑफ वाटर. और उसने वो पानी के घड़े में फेंक दी. द वाटर रोज अप. पानी ऊपर आ गया. ही ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे. उसने पानी पिया और वो उड़ गया. मोरल, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. एंड नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ज़रूरत ईजाद की माँ है. विद दिस वी हैव एंडेड अप आवर स्टोरी नंबर 2. नाउ यू हैव गॉट 2 stories. One is do good, have good, and other is thirsty crow. So what is your home task? You are going to write down both of the stories with the date and day on your notebook and then learn it orally. You can add up your own story. अगर आपको ये मुश्किल लगती है या आप इसमें चेंज करना चाहते हैं या आप इसमें थोड़ा ऐड करना चाहते हैं, you can add it up and show it to your elder one. किसी भी पेरेंट को या जो भी जिससे भी आप पढ़ते हैं उसको आप दिखा सकते हैं, ताकि अगर आपकी कोई ग्रामर की गलती है तो वो ठीक हो जाए और आप इसको
क्या करेंगे? लिखेंगे. You will write down on your notebook and learn it. Secondly, learn it orally. So this is your home task. Write down, note down these two stories. With this, today lesson is going to end, and I will send you the pictures of both stories so that you may note it down easily. With this, I'll bid you Allah Hafiz. Take best care of yourselves and your family. Thank you. Assalamu alaikum.